Now this is the visual of the second vehicle assembly building where the twin S200 boosters are being prepared in their respective assembly towers. Firstly, the nozzle assembly with the nozzle end segment will take place, and then the subsequent middle and head end segments will be assembled. When the two S200 motors are fully assembled, they are transferred on to the mobile launch pedestal. Here you can see the head end segment of P plus motor. That's the igniter of S200 getting assembled. Now you can see the assembly of L110 in its respective facility, and it will be moved. Roger. And these are the visuals from SVAB where the L110 stage is being tilted and assembled between the booster stages. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह तृतीय तथा अंतिम चरण है LVM3 का, जिसे हम क्रायो अपर स्टेज के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजन होता है, कॉम्प्लेक्स इंजन जो कि क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है। यह अभी आप देख रहे हैं EB, जिसे इक्विपमेंट बे कहा जाता है। यह एक तरीके से दिमाग है पूरे लॉन्च व्हीकल का, और यह दृश्य है 36 वन वेब के उपग्रहों का, जिसे ऊष्मा कवच के अंदर परिरक्षित कर दिया गया है। इसे हम एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं, और इसे बड़ी सावधानी पूर्वक व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जाएगा। अब तक एकीकृत यान जिसमें S200, L110 और क्रायो स्टेज एकीकृत कर दिए गए हैं, उसके ऊपर में उपग्रहों को समायोजित कर इसे लॉन्च पैड लाया जा रहा है। विहंगम दृश्य शार का, इसे बड़ी सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड लाया गया, और आगे के पूरे परीक्षण तथा तरल नोदक का भराव यहां से किया जाएगा। On your screens now, the magnificent sight of the LVM3 M3 OneWeb India mission standing at the second launch pad umbilical tower. The launch of LVM3 OneWeb India 2 mission is scheduled to take place today, the 26th of March 2023 at 9 hours 20 seconds Indian Standard Time from the second launch pad. This launch is the second commercial mission of LVM3. Earlier, on 23rd of October 2022, LVM3 M2 had carried 36 satellites of OneWeb. Today's mission intends to place 36 more satellites of OneWeb in 450 kilometers circular orbit with an inclination of 87.4 degrees. The launch is collaborated through New Space India Limited, a public sector establishment under Department of Space. The countdown for the mission is 24 hours long and the activities are taking place unhindered. Roger. प्रमोशन के लिए वातावरण पूरी तरह सामान्य है, मौसम खुला हुआ है। दर्शकों के लिए भी जो यहाँ आए हुए हैं उन्हें आंखों देखा अनुभव होगा, बहुत ही रोमांचक अनुभव होने वाला है। यह दर्शक दीर्घा यहाँ उपस्थित आंखों देखा अनुभव लेने के लिए, बहुत भारी संख्या में यहाँ दर्शक आए हुए हैं। अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक पल होता है एक इसरो के सबसे भारी लॉन्च व्हीकल के लिफ्ट ऑफ को देखना। These are the visuals from the launch view gallery here at Sriharikota. More than 10,000 enthusiastic audience have joined to watch the launch live. Roger. लोगों का उत्साह देखते ही बनता है।
अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। इस प्रमोशन की उल्टी गिनती 24 घंटे पहले प्रारंभ हो चुकी है और सारी गतिविधियां पूर्व निर्धारित रूप से तथा सुनियोजित तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। अब हम प्रमोशन से 22 मिनट 19 सेकंड की दूरी पर हैं। इस दौरान यान तथा उपग्रहों को पावर ऑन कर उनकी स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जा रही है। तरल नोदक का भराव कर तथा स्थिति प्राप्त कर भराव शुरू किया जा चुका है। अंतिम आवेशन के पश्चात यान पूर्णतः तैयार होगा अपने मिशन को पूरा करने के लिए। सभी वैज्ञानिक, तंत्र विशेषज्ञ, अभियंता अपने तंत्रों के स्वास्थ्य जांच कर और संतुष्ट होने पर तंत्रों की सूचना अपने तंत्र निदेशक को देंगे। Several teams of ISRO belonging to the range, launch vehicle and tracking have worked together with the customer team of OneWeb for getting the resources ready for the launch. We are about 21 minutes away from the launch. Noted. इसमें और काउंटडाउन के समय कई प्रमुख तंत्रों के स्वास्थ्य जांच हो रही है। इसमें बैटरी का आवेशन, ट्रैकिंग स्टेशन से संचार जांच, मिशन कंप्यूटर, वास्तविक समय तंत्र, एकॉस्टिक सप्रेशन सिस्टम, जायरो पैकेजेस आदि की जांच संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। कुछ अंतिम जांच के पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। ROD Roger. RSO to ROD. Range safety systems are ready for the launch of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission. ROD Roger. CNC to TTC Director. All ISTEC network stations confirm readiness to support real-time launch of LVM3 OneWeb India 2 mission. TTC Director Roger. You can start rolling. Minus 20 minutes. Request all stations change over to channel 2. Has started data storage. Even number 453, 454, 461, 466 completed. The launch vehicle is ready with all its systems being in the final level of readiness. All the propellants have been serviced. Batteries have been charged. Please change over to channel 2. This is Vehicle Director. Based on the vehicle system performance, vehicle is ready for the launch of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission. Mission Director Roger. Satellite Director calling Mission Director. All satellite systems are ready for launch. Mission Director Roger. ROD to Mission Director. Range is ready for LVM3 M3 OneWeb India 2 launch. Minus 19 minutes. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of all participating TTC stations and network for supporting LVM3 M3 OneWeb India 2 mission. Mission Director Roger. Mission Director hereby authorize the launch of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission based on the clearances of MRR and Launch Authorization Board, based on the confirmation of readiness of vehicle systems, spacecraft, range and TTC network systems by respective mission executives and prevailing favorable weather conditions. Mission Director hereby authorize for the launch operation sequence of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission for the launch today, that is 26th March 2023 at 9 hours 20 seconds Indian Standard Time. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch.
The Launch Authorization Board had reviewed the readiness of all the technical systems and amenability of whether to give the go-ahead for the commencement of countdown. You have just watched on your TV screens Pre-launch operations on C-25 stage. Shri S. Mohana Kumar, Mission Director LVM3 M3, giving clearance for the initiation of launch automatic launch sequence, based on which the initiation has been commenced. अभी अभी आपने देखा कि इस ट्रैक निदेशक, उपग्रह निदेशक, यान निदेशक तथा रेंज निदेशक, टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक ने अपने तंत्रों की Minus स्वास्थ्य 17 जांच की minutes. जानकारी मिशन मिशन निदेशक को दे दी है और PLC उसके से बाद Roger. मिशन निदेशक ने लॉन्च की अनुमति प्रदान की। Please note timing confirmed external तत्पश्चात hold यान mode. निदेशक ने PLC ऑटोमेटिक Roger. लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। इसके बाद यान स्वचालित हो जाता है और पूरा नियंत्रण ऑन बोर्ड कंप्यूटर के पास चला जाता है। Timed concert of critical activities have been carried out in the past 24 hours of countdown. 14.5 minutes ahead of the launch, automatic launch sequence TCTC is data log initiated, on it, SHAR 1 and 2 stations. which is a capsule of the most essential confirmations regarding the launch vehicle and the spacecraft systems. All stations to note hydrogen tank PLO started and the boil off commenced. Minus 16 minutes. This is vehicle director. Vehicle director authorizes ALFC to proceed with the automatic launch sequence for the launch of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission. ALFC Roger. SDA servers activated. MC confirmed reception of SHAR 1 and SHAR 2 data. अब ऑन बोर्ड कंप्यूटर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। Automatic इस दौरान launch वह sequence initiated आंतरिक for जांच कर LVM3 M3 OneWeb India 2 mission. खुद ही स्वास्थ्य जांच करेगा ALFC प्रमोचन यान की तथा सब कुछ संतोषजनक होने पर प्रज्वलन का कमांड देगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर पूरी व्यवस्था बनाई गई है विजिटर्स गैलरी के लिए, जहां Minus पर 15 ऑनलाइन minutes. रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ दर्शक आकर आंखों देखा अनुभव ले सकते हैं। अब हम प्रमोचन से 14 मिनट 47 सेकंड की दूरी पर हैं। 70 bar 5 bar 2 cryom linkages given. We are 14 minutes away from the launch. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है वन वेब द्वारा निर्मित 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की निम्न भू वृत्ताकार कक्षा में 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित करना। Minus अब 14 तक minutes. वन वेब के कुल 588 उपग्रह उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं। इस मिशन के पश्चात यह अंतिम 36 उपग्रहों के साथ वन वेब के उपग्रहों का प्रथम नक्षत्र, प्रथम पीढ़ी के नक्षत्र पूर्णतः सक्षम होंगे पृथ्वी के दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए। अब दर्शकों के लिए प्रस्तुत है एक कर्टेन रेजर वीडियो। L110 internet connection complete. T25 redundancy and integration started. LVM3 M3
is ISRO's heaviest launcher, standing high at the SDSC Shar. It is all set to launch the second batch of 36 commercial satellites of OneWeb. The first batch of 36 satellites was launched in October 2022 by LVM3 M2 launch vehicle. The OneWeb Gen 1 is a 150 kilogram satellite, and the constellation comprises of 648 individual satellites, 588 active satellites equally divided among 12 planes, operate at an altitude of about 1,200 kilometers. Minus 12 minutes. The vehicle will place the satellites in a low Earth orbit. With this launch, இருந்தபடியே ராக்கெட் இரண்டாவது ஏவுதளத்திலிருந்து ஏவப்பட உள்ள ராக்கெட்டை பார்ப்பதற்காக இங்கு வந்துள்ளனர். இந்த ராக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ராக்கெட்டானது 43.5 மீட்டர் உயரமும் 648 டன் 643 டன் எடையும் கொண்டது. இந்த ராக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது தற்போது சுமார் 5805 எடையுள்ள 36 செயற்கைக்கோள்களை அதாவது விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது. ஒரு 10 நிமிடங்கள் ராக்கெட்டானது உள்ளது. அதனால ஏராளம் குறிப்பாக தமிழ்நாடு, ஆந்திரா உள்ளிட்ட ஒரு மாணவர்கள் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுகணத்தில் இரண்டாவது ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணில் செலுத்தப்படும் செயற்கைக்கோள்கள் 43.5 மீட்டர் உயரமும் 643 டன் எடையும் கொண்ட இஸ்ரோவின் LVM3 ராக்கெட். இது சந்திராயன் 2 உட்பட 5 முறை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட LVM3 தற்பொழுது 6வது முறையாக இன்று காலை 9 மணி அளவில் விண்ணில் பாய்கிறது. மொத்தம் 5805 கிலோ எடை கொண்ட இந்த 36 செயற்கைக்கோள்கள் 450 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தாழ்வான புவி வட்டப்பாதையில் நிலைப்படுத்தப்பட உள்ளது. ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்தி தொகுப்பில் மீண்டும் இணையலாம். Explain the mission's flight events. S-200 strap-on boosters will simultaneously fire at T0 or the exact time of liftoff, providing the thrust for liftoff, and they continue till 138 seconds. The core L110 liquid stage, powered by hypergolic liquid propellant, ignites 111 seconds into the flight when the rocket is at an altitude of 43 kilometers and having acquired a relative velocity of 1.2 kilometers per second. The S-200 strap-on boosters are jettisoned 138 seconds into the flight. The next two flight events happen at quick succession when the rocket would have negotiated the dense atmosphere. They are the separation of payload fairing, as the aerodynamic shape of the rocket is no longer important, and the other event is the initiation of closed-loop guidance. The L110 core stage that would have provided thrust to negotiate the trajectory for close to 200 seconds completes its burn and separates at 308 seconds into the flight, while the rocket would have acquired 244 kilometers altitude. The cryogenic upper stage C25 is ignited 2 seconds later and burns for 632 seconds, adding 204 kilometers to the altitude and a remarkable 4.3 kilometers per second to the relative velocity. After the cryo stage is shut off at 942 seconds into the flight, there is no significant change in the altitude, but the 36 passenger satellites of OneWeb India 2 and 9 batches of 4 numbers each, while the cryo stage reorients and adds velocity for subsequent batches of satellites. There is going to be a gap of 30 and 800 seconds alternately for each batch of OneWeb satellite separation. The separation mechanism for the satellites is part of the satellite dispenser.
अब हम प्रमोशन से 7 मिनट 46 सेकंड की दूरी पर इस प्रमोशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यह यान त्रिचरणीय यान है। इन चरणों को क्रमानुसार प्रज्वलित कर यथा समय पृथक कर निश्चित कक्षा प्राप्त की जाएगी। इस मिशन का पूरा कार्यकाल 75 मिनट का होगा। यह सबसे ज्यादा समय वाला प्रमोशन मिशन है। सर्वप्रथम T0 पर S200 बूस्टर्स, दोनों S200 बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। इनका प्रज्वलन काल 120 सेकंड का होगा। तत्पश्चात L110 चरण का प्रज्वलन किया जाएगा T+111 सेकंड्स पर। इसके लगभग 10 सेकंड के पश्चात L110 और दोनों S200 बूस्टर प्रज्वलित रहेंगे। तत्पश्चात S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। अब यान लगभग प्रमोशन से 187 सेकंड पर आकर जब 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका होगा, तब वह घने वातावरण से बाहर जा चुका होगा और तब पेलोड फेयरिंग को यान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके बाद T+308 सेकंड्स पर L110 चरण को, जो कि दूसरा चरण है यान का, उसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। -6 मिनट्स। L110 के पृथक होने के तुरंत बाद C25 यानी क्रायो अपर स्टेज का प्रज्वलन होगा और यह T+942 सेकेंड्स यानी करीब 640 सेकेंड तक जलकर शांत हो जाएगा। इस दौरान यान अपने प्रथम अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर चुका होगा। इस यान में 36 उपग्रह अपनी कक्षा के लिए सफर कर रहे हैं और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से 9 बार में उनकी निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस दौरान क्रायो स्टेज को पुनः दिशा तथा अभिवृत्ति में बदलाव कर निर्धारित कक्षाओं में उपग्रहों को प्रमोचित किया जाएगा। चूंकि यह प्रमोशन मिशन बहुत लंबा है, इस दौरान यान हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर चला जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वह पृथ्वी के चक्कर लगाकर हमारी ट्रैकिंग रेंज पर पुनः उपस्थित होगा और तब हम सभी उपग्रहों के अंतःक्षेपण की पुष्टि करेंगे। अब हम प्रमोशन से 4 मिनट 35 सेकंड की दूरी पर हैं। पूरे तंत्र सामान्य स्वास्थ्य जांच में सामान्य है। The sheer size and the enormous thrust to be generated at the liftoff necessitates some special systems for the GSLV launch pad when it takes off. One such system being acoustic suppression system. -4 minutes. At the time of liftoff, the twin S200 boosters generate enormous acoustic and then which have a potential to damage the electronics in launch vehicle. As a part of acoustic suppression system, huge quantities of water is injected onto the launch pedestal to provide denser medium of water droplets to attenuate the liftoff acoustics. Onboard computer in flight mode. -3 minutes. इस प्रमोशन मिशन के पश्चात 36 उपग्रहों के साथ OneWeb के उपग्रहों के प्रथम नक्षत्र पूर्णतः तैयार हो जाएगा
और पृथ्वी के दूरस्थ इलाकों पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। इस प्रमोशन में भी पहले की तरह 9 चरण हैं, जिसमें 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया जाना है। एक चरण में 4 उपग्रह प्रमोचित किए जाएंगे, क्रमशः 8 चरणों में तथा 75 मिनट में यह पूरा मिशन पूरा किया जाएगा। इसमें उपग्रहों का कुल भार 5,804 केजी है। हर एक उपग्रह करीब 150 केजी का भार है। अब हम प्रमोशन से 2 मिनट की दूरी पर Visuals from the launch complex, the launch pad on your screens now. कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं, जिसके पश्चात 1 मिनट 24 सेकंड पर दोनों S200 सॉलिड बूस्टर्स को प्रज्वलित किया जाएगा। यह LVM की 6वीं उड़ान होगी। इससे पहले 5 उड़ानें सफलतापूर्ण पूरी की गई हैं। -1 minute. Excitement and seriousness simultaneously building up. All subs on. -50 seconds. Rheostat is ready. Swaddle ready. All sequencers are on. -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. And 30 30 seconds. seconds to go. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of powerhouse searing through the sky. A magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M3 प्रमोशन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। First stage performance normal. Here from the mission control center we can feel the vibrations of the launch. दोनों S200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर Generating a peak thrust of 5,952 kilonewtons in vacuum with the S200 motors thrusting +1 currently. minute. S200 मोटर जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका एक मोटर का प्रणोदक करीब 200 टन का होता है। इस दौरान यह कुल 12,000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है और यह करीब 136 सेकंड्स तक चलकर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The trajectory during the atmospheric regime is to have least angle of attack with respect to wind so that the launch vehicle structures experience lesser loads. The S200s are 26 meters long and 3.2 meters in diameter, carrying 202.6 tons of propellant. अब कोर चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है।
The code L1 L110 and the two performance S200 boosters, all thrusting currently. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे S200 का पृथक्करण। 200 stages are separated. जी हाँ, S200 बूस्टर्स को सेपरेट कर दिया गया है तथा L110 या चरण प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। On your TV screens, the visuals from the onboard camera showing the separation event of the S200 boosters. The L110 core stage alone currently thrusting. S200 बूस्टर्स को जेटिसनिंग मोटर का प्रयोग कर बड़ी सावधानी से यान से अलग कर दिया जाता है। L110 जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, वर्तमान में प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Slope guidance initiated. Shar, Bangalore and Trivandrum ground stations are currently tracking and the two major flight events have been completed. The separation of payload fairing and the initiation of closed loop guidance. यान की ऊंचाई 142 किलोमीटर। अब यह वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यान पूरी तरह सामान्य निष्पादन करता हुआ अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, यानी सेंसर्स की मदद से वह स्वयं का दिशा निर्धारण कर रहा है। Current altitude 163 kilometers. Plus 4 minutes. The L110 stage is powered by twin Vikas engines. The total burn time is close to 200 seconds. यान पूर्णतः अपेक्षित पथ को अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Stage is authorized. कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे L110 चरण का प्रज्वलन समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात L110 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। 110 stage thrust cut off and separated. C25 ignition commanded. C25 ignition confirmed. Several pieces of good news for the flight events. L110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle. The C25 cryogenic engine has started its operation. L110 चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अंतिम चरण जो कि C25 क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफलतापूर्वक प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में वह प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। Plus 6 minutes. इसका प्रज्वलन काल करीब 640 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कक्षा की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी और अंतःक्षेपण किया जाएगा। 28.55 tons of propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. तृतीय तथा अंतिम चरण LVM3 का क्रायोजेनिक ईंधन LH2 तथा लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित है। यह चरण बहुत ही जटिल C20 इंजन से बना होता है। इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है। इस चरण का प्रज्वलन L110 चरण के बंद होने के तुरंत बाद किया गया है।
यह चरण कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। The advantage of having cryo stage as upper stage is the high specific impulse of the propellant combination. Cryo stage performance normal. Having high specific impulse roughly means a lesser quantity of fuel being able to impart higher delta V or the velocity addition to the ongoing stage. Plus 8 minutes. हर एक चरण के तंत्र विशेषज्ञ पूरी तरह रोमांचित रहते हैं जब उनका तंत्र पूर्ण निष्पादन कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Shah, Trivandrum and Bengaluru ground stations tracking in the meantime. The tracking of the LVM3 OneWeb India 2 mission is carried out through a network of ground stations of Isro Telemetry, Tracking and Command Network, ISTRAC, along the flight path. The trajectory and separation events are ascertained through the ground stations. For this mission, Sriharikota, Bengaluru, Trivandrum, Antarctica, Savalbird and Lucknow ground stations are participating. Plus 9 minutes. To cater to the visibility between the Trivandrum and Antarctica ground station limits, a shipborne terminal is deployed to importantly view the cryo stage operational regime and the separation of first and second batch of performance satellites. normal. For this particular mission, for about 43 minutes after the injection of the fourth batch of satellites, the rocket goes out of the coverage of ground tracking stations. In the meantime, the data of the inertial navigation system is stored on board, and when the next ground station, Savalbird, is starting to acquire the data, the confirmation of separation events and exact time and injection parameters of the separation events are telemetered. OneWeb समूह का यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक समझौते के अंतर्गत यह दूसरा प्रमोचन मिशन है। इस समझौते के तहत 72 उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है, जिसमें से 36 उपग्रह LVM3 M2 OneWeb इंडिया 1 मिशन के साथ उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं और आज OneWeb इंडिया 2 मिशन में अगले 36 उपग्रहों को प्रमोचित किया जा रहा है। यह OneWeb कंपनी के लिए 18वां प्रमोचन है। इससे पहले कुल 588 उपग्रह अन्य प्रमोचन यान से पहले ही भेजे जा चुके हैं। इस मिशन की सफलता के पश्चात OneWeb कंपनी प्रथम निम्न भू कक्षा वाले उपग्रहों के नक्षत्र का निर्माण पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही OneWeb उच्च गति कम विलंब वाली वैश्विक संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। इसमें विश्व स्तर पर समुदाय, उद्यम, सरकारों को जोड़ने का यह सर्वप्रथम प्रदर्शन कर पाएंगे। न सिर्फ उद्यम बल्कि छोटे कस्बे, गांव, म्यूनिसिपैलिटी तथा स्कूल जैसी सुविधाएं जो कि दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर हैं, उन्हें जोड़ा जा सकेगा। यह मिशन न सिर्फ OneWeb के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। As we were mentioning earlier, the present mission is the second mission of OneWeb with ISRO in collaboration with New Space India Limited. The previous mission with LVM3 M2 was the 14th mission for OneWeb and first with ISRO. The 36 satellites had then been placed in 601 km circular orbit, while for the present Plus mission, 12 minutes. the intended orbit is 450 km circular
Correspondingly, the relative velocity requirement at the time of injection is higher compared to the previous mission. The present mission LVM3 M3 OneWeb India 2 is the 18th launch mission for OneWeb. वर्तमान में तृतीय Cryo stage performance normal. और अंतिम चरण प्रज्वलित है और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम उड़ान से 760 सेकंड आगे आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 465 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Plus 13 minutes. OneWeb is a global communications network powered from space, enabling connectivity for governments, businesses, and communities. OneWeb Gen 1 satellite constellation comprises of 648 individual satellites which are placed in low Earth orbit. India's Bharti Enterprises serves as a major investor and shareholder in OneWeb. As we told, this is OneWeb's 18th launch, its third this year. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ और यह दर्शाता है कि इसरो किस गुणवत्ता से, किस विश्वसनीयता से यह तंत्र का विकास कर इनका निर्माण किया जाता है और इनका निष्पादन पूरी तरह अपेक्षित। Cryo stage performance normal. तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। For the present mission, the total burn time of C-25 is 632 seconds. Plus 15 minutes. We are 15 minutes past the launch time. Cryogenic upper stage currently thrusting. तृतीय चरण C-25 सामान्य निष्पादन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह इंजन इतना जटिल है और भारत इसमें पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। अभी अभी पुष्टि हुई, C-25 इंजन को शट ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। The C-25 stage thrust has been cut off and now we are awaiting the correct injection parameters for the separation of the first and second batch of satellites. Plus 16 minutes. प्रथम चरण के 4 उपग्रहों की कक्षीय स्थितियां कुछ इस प्रकार होंगी। इसकी ऊंचाई 455.5 किलोमीटर के करीब और सापेक्ष गति 7.63 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। Today's launch will bring the total number of satellites in the constellation to 618. A major milestone will be achieved with the number of satellites now in orbit, enabling the global service. OneWeb will become the first LEO operator to reach this milestone of being ready to roll out its global coverage.
वर्तमान में तृतीय चरण injection conditions are achieved. अपनी उचित अभिवृद्धि प्राप्त करता हुआ और कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे प्रथम समूह के 4 उपग्रहों का प्रमोचन। Cryo stage orienting itself for the separation event of the first batch of satellites, namely 1K, 3K, 5K and 7K. 30 seconds from then, the second batch of satellites, namely 2A, 4A, 6A and 8A will be separated. Plus 18 minutes. நியர்பை இருக்கிற கண்ட்ரிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீலங்கா பக்கம்லாம் போகும்போது செப்பரேட் ஆனது இல்ல வேற ஏதோ ஃபால்ட்னால கீழே விட வேண்டிய சூழ்நிலை வருதுன்னா லைஃப் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த சைட்ல. அதனால மோஸ்ட்லி என்ன பிளான் பண்ணுவோம்னா கடல் வழியாவே போறதுக்கு பிளான் பண்ணுவோம். இப்ப ஒரு சேட்டலைட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு 120 டிகிரில நம்ம லான்ச் பண்ணணும், ஸ்ரீலங்காவை கிராஸ் பண்ணி தான் போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குன்னா நம்ம டைரக்டா அதை கிராஸ் பண்ணி போயிட முடியாது. ஏன்னா அங்க ஹியூமன் லைஃப்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா வேற ஒரு டைரக்ஷன்ல எடுத்துட்டு திருப்பி அந்த இதை அச்சீவ் பண்ணுவோம். ஒரு எல்லை வந்து ஒரு மாதிரி பார்த்த வந்து வேற மாதிரி அச்சீவ் பண்ணுவோம். வேற குலசேகரப்பட்டினத்துல நம்ம கொண்டு வரும்போது இந்த 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 ப்ராப்ளத்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். வேற பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு ஃபியூவல் செலவாயிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டை கிராஸ் பண்ணி போகுது இல்லையா, இந்த ஃபியூவலையும் ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம். இந்த ஆப்டிமைஸ் பண்றது மூலமா கமர்ஷியலா ரொம்ப குறைஞ்ச செலவுல இன்னும் நம்ம நல்ல சேட்டலைட்டை நம்ம லான்ச் பண்ண முடிய ஒரு இது வரும், பார்த்திபன், ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும். நன்றி கவியரசு. தொடர்ந்து நாம் இந்த விவகாரம் குறித்து, இந்த விஷயம் குறித்து நிறைய பேசலாம். தற்போது ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இந்த சிறப்பு நேரலையில் இணையலாம். 3, 2, 1. Go for launch. K, 5K, 7K satellites are separated. और यहाँ हर्ष का पल सबके सामने प्रथम 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। अगले 30 सेकंड में अगले 4 उपग्रह 2A, 4A, 6A और 8 का अंतक्षेपण किया जाएगा। Here the LVM3 M3 OneWeb India 2 mission has injected its first batch. 2A, 4A, 6A, 8A satellites are separated. Visuals from the onboard camera confirming the separation event of the second batch of satellites 2A, 4A, 6A and 8A. जी हाँ, सफलतापूर्वक द्वितीय समूह के 4 उपग्रहों को अंतक्षेपित कर दिया गया है, 2A, 4A, 6A और 8A। यह सभी के लिए बहुत ही हर्ष का पल, यह मिशन अपनी सफलता की ओर। Current altitude is 457 kilometers. These satellites will eventually be maneuvered into the altitude of about 1200 kilometers. Plus 21 minutes. 12 orbital planes cumulatively contain 588 satellites that are active. Each orbital plane has a separation of 4 kilometers in altitude to avoid collision of satellites. ऑन बोर्ड कैमरा का यह विहंगम दृश्य जिसमें हम देख रहे हैं सैटेलाइट अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। अभी मिशन जारी है। अगले कुछ क्षणों में हम देखेंगे अन्य 4 उपग्रहों का प्रमोशन। इस दौरान तृतीय चरण पुनः
कक्षा की स्थितियां प्राप्त करने के लिए उचित अभिवृत्ति प्राप्त करेंगे। अगले समूह के 4 उपग्रहों को प्रमोचन के लिए अब से करीबन 800 सेकंड की देरी लगेगी। The separation events are timed apart as 30 seconds and 800 seconds between alternate batches. The first and second batch of satellites have been separated. Now we are waiting the third batch of satellites. But in the meantime, the cryogenic upper stage will reorient itself and add velocity to get ready for the next separation. The first and second batch of satellites have been injected into 455 and 56 kilometers of altitude with a relative velocity of 7.628 kilometers per second. For the next batch of satellites, the stage will go to an orbit of 469 kilometers altitude, while the relative velocity will be 7.611 kilometers per second. இந்த மிக சில நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. நம்ம எந்த ஒரு சங்கடங்களை சந்தித்தாலும் சரி, சவால்களை சந்தித்தாலும் சரி, நம்முடைய விண்வெளித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சிகளும் சரி, பொதுமக்களாகிய நம்ம தரப்பில் இருந்தும் சரி, எப்பயுமே அது ஒரு பெருமையான விஷயமா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டு நிலைநிறுத்தப்பட்டு விட்டது, அந்த ஒரு சேட்டலைட் செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக செயல்படுகிறது அப்படின்ட்டு செய்தியில் பார்க்கும்போதே நமக்கு ஒரு பெருமிதமான ஒரு உணர்வு மேலோங்கிடும் அப்படின்றதுல மாற்று கருத்து கிடையாது. அதுலேயும் முக்கியமாக இப்போ செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் வெப் திட்டம் ஏன் கூடுதல் சிறப்பு பெறுகிறது அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது, இந்த திட்டத்தை ஆக்சுவலாக செயல்படுத்த இருந்தது ரஷ்யா விண்வெளித்துறையின் மூலமாகத்தான் இது விண்ணில் செலுத்தப்பட இருந்தது. யுக்ரைனுடன் ரஷ்யா போரில் ஈடுபட்டதால இந்த திட்டத்தை ரஷ்யாவிடமிருந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஒன் வெப் நிறுவனத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து தான் அந்த திட்டம் கடைசி நிமிடத்தில் தான் இந்தியாவின் கைகளுக்கு வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து அவசரமாகவே இதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனாலும் எவ்வளவுதான் அவசரமாக செய்தாலும் கூட மிக சிறப்பான ஒரு பணியை தான் இந்திய விண்வெளித்துறை ஒன்வெப் நிறுவனத்திற்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 36 செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிலைநிறுத்தியது இஸ்ரோவின் NSIL. தற்பொழுது அடுத்த கட்டமாக 36 செயற்கைக்கோள்களை தாங்கிக் கொண்டு விண்ணில் சீறி பாய்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது LVM3. இன்னும் சில நிமிடங்களில் இந்த செயற்கைக்கோள்களானது புவிவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது. அங்கு அதற்காகத்தான் விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். திட்டம் முழுமையாக வெற்றியடைய வேண்டும் என்பதுதான் அனைவருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது. அது செயற்கைக்கோள்கள் நிலைநிறுத்தப்படும் நேரத்தை பொறுத்து. தொடர்ந்து LVM3 ராக்கெட் விண்ணில் சீறி பாய்ந்த காட்சிகளை மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம். 1-0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off, 640 tons of powerhouse searing through the sky. Magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का. First stage performance normal. Here from the Mission Control Center we can feel the vibrations of the launch. दोनों S200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर. Generating a peak thrust of 5,952 kilonewtons in vacuum. S200 motors thrusting currently. 1 minute. S200 motor जो कि எவ்வளோ ஒரு பெருமையான தருணம். இங்கிலாந்து நாட்டுடைய அந்த 36 செயற்கைக்கோள்களையும் கிட்டத்தட்ட 6000 கிலோ எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்கள் அதையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு விண்ணில் வெற்றிகரமாக சீறி பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது LVM3. அங்கே ஒரு 5000 பொதுமக்கள் அங்கே நேரடியாக இந்த காட்சிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் உங்கள் வரவேற்பறையில் உங்கள் தந்தி தொலைக்காட்சியில் நீங்களும் இதை நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். தொடர்ந்து நமது விருந்தினர்
அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் உதவி பேராசிரியர் கவியரசுவிடம் பேசலாம். கவியரசு, மீண்டும் உங்களோட இணைவதில் மகிழ்ச்சி. இப்போ நம்ம இடைவெளிக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இங்க தமிழகத்தில் குலசேகரப்பட்டினத்தில் அமைய இருக்கக்கூடிய அந்த ஏவுதளத்தை பத்தி. அந்த ஏவுதளமும் இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு வசதி இருக்கக்கூடிய ஏவுதளமாக இருக்க போகிறதா, இல்ல சிறிய அளவிலான ராக்கெட் திட்டங்கள் அங்க செயல்படுத்த வருவதற்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்கிறதா? பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து பிளான் பண்ணிருக்கிறதே வந்து சிறிய ரக ராக்கெட்டை வந்து அங்கேருந்து ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணலாம், ஆல் த ஸ்மால் மிஷன்ஸ் வந்து அங்கிருந்து லான்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பிளான் இப்போதைக்கு ஆஸ் ஆஃப் நவ். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா பெங்களூர்ல இருக்கிற ஒரு ரிசோர்ஸ் அப்படியே நம்ம குலசேகரப்பட்டினத்துக்கு டைவர்ட் பண்ணி வச்சிட முடியாது. அதனால இனிஷியலி தே ஸ்டார்டட் வித் the facilities only for the small launching vehicle, so that the commercial take off everything வந்து நம்ம பெங்களூர்லயே பண்ற மாதிரியும், வேற கமர்ஷியலா லெஸ் தென் ஒரு 500 கிலோவுக்கு கீழே இருக்கிற சேட்டலைட் எல்லாமே நம்ம குலசேகரப்பட்டினத்துல லான்ச் பண்ற மாதிரி இனிஷியலா டெஸ்ட் பெட்டை அவங்க அங்க அமைச்சிருக்காங்க. கூடிய விரைவில் வந்து பெரிய சேட்டலைட், பெரிய வெயிட்டை தூக்கிட்டு போற சேட்டலைட்டையும் அங்க அமைக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். பார்த்திபன். திரு கவியரசு, இறுதியாக உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி. இப்போ மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய சந்திரயான் 3 அந்த திட்டம் எப்பொழுது செயல்படுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது, அது பத்தி? எல்லாருமே ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து மக்களுமே அதை வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் கிளிச்னால நம்மளால சரியா தரையிறங்க முடியல. வேற சந்திரயான் 3 உடைய ஆல் த இனிஷியல் டெஸ்ட் வந்து ISRO கேரி ஓவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதா இருக்கட்டும், வேக்கம் டெஸ்டா இருக்கட்டும், இல்ல ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி டெஸ்டா இருக்கட்டும், ஆல் த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து இனிஷியல் டெஸ்டிங் ஃபேஸ் போயிட்டு இருக்கு பார்த்திபன். கூடிய விரைவில் அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான நியூஸ் வந்து எல்லாருக்குமே ISRO 1 or 2 months எல்லாருக்குமே சொல்லுவாங்க. we are ready for the Chandrayaan 3 அப்படிங்கிற ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட், எக்ஸைட்டிங்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் கூடிய விரைவில் எல்லாருக்கும் வரும் பார்த்திபன். நன்றி திரு கவியரசு. உங்க இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய பல்வேறு கருத்துக்களையும் தகவல்களையும் நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு. நேயர்களே, LVM3 M3 OneWeb India 2 இந்த திட்டமானது வெற்றிகரமாக தற்பொழுது விண்ணில் சீறி பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் சில நிமிடங்களில் விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கின்றன அந்த செயற்கைக்கோள்கள். ஒரு முக்கியமான திட்டம் இது இந்தியாவிற்கு. இவ்வளவு பெரிய எடையை தாங்கிக் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு ராக்கெட் இந்த LVM3. அதுவே நமக்கு கூடுதல் பொறுப்பையும் கூடுதல் பெருமையும் வழங்கி இருக்கிறது என்றே சொல்லலாம். இன்னும் பல்வேறு திட்டங்களை இஸ்ரோ செயல்படுத்த இருக்கிறது. இன்னும் சில மாதங்களில் சந்திரயான் 3 திட்டமும் செயல்படுத்த இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது எல்லாமே இந்திய விண்வெளித்துறையுடைய மகுடங்களை அலங்கரிக்கக்கூடிய ரத்ன கற்கள், மாணிக்க கற்கள், மரகத கற்கள். உங்களுக்கு என்ன கற்கள் வேணுமோ அதை நீங்க சொல்லிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பெருமைமிகு தருணமாக இது மாறி இருக்கிறது. மற்றும் ஒரு பெருமைமிகு தருணம் இஸ்ரோவிற்காக. நம்முடைய விண்வெளி பயணம் தொடரும், விண்வெளித்துறையில் நம்முடைய வெற்றிகளையும் தொடரும் என்று சொல்லிக்கொண்டு தற்பொழுது ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் செய்தி தொகுப்பில் இணையலாம். 1-0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off, 640 tons of powerhouse searing through the sky. Magnificent insight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M3 प्रमोशन। டீ குடிக்கிறீங்களா இன்ஜினியர் சார்? ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? நமக்கு கல்யாணமாகிய 50 வருஷம் ஆயிடுச்சு. चूंकि यह मिशन पूर्ण दक्षिणी मिशन है, इसमें शार स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस, इसके अलावा बेंगलोर, त्रिवेंद्रम और ख़ास तौर पर तैनात किए शिपबोर्न ट्रैकिंग, अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन, स्वालबर्ड स्थित तथा लखनऊ स्थित भू स्टेशन हमें इस यान की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान में अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन हमें यान के आंकड़े प्रदान कर रहा है। "20 satellites of this mission will be separated in the non-visibility region, whose confirmation will be available much later."
अभियान उचित अभिवृद्धि प्राप्त करता हुआ अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर रहा है। वन वेब के प्रथम पीढ़ी के उपग्रह नक्षत्र 150 केजी वाले उपग्रह के समूह हैं। अब तक 588 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। इस प्रमोशन के पश्चात यह संख्या 618 पहुंच जाएगी। इन सभी उपग्रहों को 12 समतल प्लेन्स में बांटा गया है और यह 1200 किलोमीटर की ऊंचाई से सेवाएं प्रदान करेंगे। हर एक प्लेन में आपस में 4 किलोमीटर की दूरी बनाई गई है ताकि इससे टकराव की संभावना खत्म की जा सके। तृतीय और अंतिम चरण यान का उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चुका है। कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में अगले समूह के 4 उपग्रह 1A, 3A, 5A तथा 7A का अंतक्षेपण उनकी निर्दिष्ट कक्षा में किया जाएगा। 1A, 3A, 5A, 7A satellites are separated. And we have the confirmation of the separation of satellites 1A, 3A, 5A and 7A. This completes the third batch of separation. जी हाँ, तृतीय समूह के उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। अगले कुछ सेकंड्स में अगले 4 उपग्रह 2B, 4B, 6B तथा 8B 6B, 8B satellites are separated. Now we have the confirmation of the 4th batch of satellites. This is Range Operation Director. 16 satellites are separated till now. Mission is continuing. Remaining 20 satellites will separate as per timeline in the non-visibility period. These 20 satellite separation will be confirmed after Svalbard telemetry station acquisition. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. All stations involved in operation shall continue in positions. Others shall reassemble at 10 hours IST. Over to Mission Director. सोलह उपग्रह प्रमोचित किए जा चुके हैं। अभी भी मिशन जारी है। अगले 20 उपग्रह प्रमोचित किए जाने हैं। कुछ समय पर इसकी पुष्टि की जाएगी। So far, 16 satellites have been injected into the orbit, 20 more to go. Now let's join for the address by Secretary TOS Chairman ISRO, Sri S. Somnath. Radhakrishnan. Mohan. Congratulations to NSIL and ISRO and OneWeb for the successful launch of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission. As we know today, the first 16 satellites of the series are already placed in the right orbit, and now it has gone in the far south of the Earth, and we will be getting confirmation of the remaining spacecraft separation soon once the onboard storage data is acquired by our Indian ground stations. Till now, based on the observations, the vehicle has done extremely well. It went up to the right orbit and placed spacecraft at the right orbit and also with very minimal disturbances to it. So I am very happy today for the consecutive launch success of GSLV MAR3, that is LVM3. And I want to specifically thank NSIL for bringing this opportunity to us and also for the confidence
that OneWeb India team has on ISRO for building this rocket for them for this commercial launch. I also want to thank ISRO for the wonderful work that they have done to make this rocket very reliable and rugged, once again demonstrating the capability of the rocket for placing large, heavy payloads into the right orbit without any glitch. And we look forward for greater engagement with our commercial partners for making this rocket one of the best in this class. So specifically, I want to thank the entire ISRO family, the LVM3 project team for making this historic event happen today. So let me also introduce the Chairman and Managing Director of NSIL, Sri Radhakrishnan, and also the Mission Director of the LVM3 this mission, Mr. Mohana Kumar. So over to Radhakrishnan. Good morning, and I'll share the views of Chairman ISRO, Secretary Department of Space, in congratulating the entire team ISRO for giving us this wonderful, wonderful mission, what we have seen. As you all know, I think having a repeat performance of any particular launcher, it's not an easy thing to do. And what we had demonstrated today using the LVM3 for the commercial customer, it is extremely momentous day for us. The kind of maneuvers, one special thing what we see in this particular mission is the cryogenic stage being used for doing such a complex maneuver to meet the requirements of OneWeb in deploying 36 satellites. This is extremely challenging stuff that has been done and repeated here once again in the second mission. Now, on behalf of New Space India Limited and ISRO, we would like to compliment our esteemed customer who had given a lot of faith and belief in us and believing in our capabilities. And I would say we are doubly happy that we are part of such a big journey the OneWeb has gone through in the last 3 years. By deploying these particular satellites, I know your services are going to go global. And we are delighted that we are a small contribution to your such a long journey that you have done over several years. I would like to take this opportunity to reassure OneWeb and the entire team here that NSIL would be happy to engage in any future endeavors that would like in addition to the launch solution that we will continue to provide to your team. Thank you very much, and thank you entire ISRO team for this member. Thank you, sir. Respected Chairman ISRO, Secretary Department of Space, dignitaries, viewers, very good morning to you all. Once again, the launch vehicle LVM3 has shown its might and ruggedness in taking heaviest payload from our soil to the precise orbit which is required by the satellite. The orbital parameters are achieved and the 36 satellites are being deployed in a sequential manner in 9 steps of 4 numbers each, and 16 satellites are already now we have got the data. Now once the vehicle is coming to the visibility range, remaining satellites separations also will be reported. I take this opportunity to thank the entire team ISRO, especially from the launch vehicle centers, the VSSC, LPSC, IPRC, ISTRAC and SDSC SHAR for the wonderful successful mission, and all the deliverables from all the SDAs have performed perfectly well and its intended functions were happened. And this time we have done the assembly of the vehicle in the newly built second vehicle assembly building, wherein from the nozzle trial actuation through the S200 stacking to the entire vehicle integration was carried out under one roof with utmost care and best standards of safety. And the vehicle was moved to the launch pad also through a newly built track. Every activities were smooth and safe, and we could achieve the mission in a wonderful manner. I take this opportunity to thank all the industrial partners of ISRO who are supplying the products. The uninterrupted supply of hardware and resources are key players to have the mission in the required scheduled times, and I thank all the industrial partners across India who are partners to this success. I thank all the mission executives who have actively contributed towards this
mission. And my best wishes to the OneWeb team for the continued successful operations of the satellite on board. And my thanks are due to the entire LVM3 core project team for the untiring efforts of 72 days of launch campaigns. This time, the record time we could complete the launch campaign in 72 days. The team LVM3, which was trained and brought up by none other than our beloved chairman. I take this opportunity to thank chairman on behalf of the entire project for being with us as a beloved patron. And sir, with your timely guidance and learned opinions, made our decision-making process very fast, which enabled us to complete the mission in the record time of 72 days. The key success is the robust review mechanism existing in ISRO. We have undergone all the reviews, the DRT forums, which are the primary agency to clear all the subsystems went into the mission, and FRR followed by MRR and Launch Authorization Board. I take this opportunity to thank all the chairmen and members of all review forums for the mentoring and guidance. And finally, I thank God Almighty for all the blessings in the form of the glorious success, which was the purpose of the 72 days of penance of all of us, called the launch campaign. Thank you. Jai Hind. Thank you once again, Radhakrishnan and Mohanakumar, for that feedback. And let me take this opportunity to thank once again the entire ISRO community for their work towards making this rocket one of the best in this class. And we are getting ready for the next launch campaign soon with the launch of the GSLV-3. But before that, we are also getting ready for the launch of the PSLV, which is currently going on. In April, we will have the launch of, again, a commercial launch of PSLV. And we are also commencing the campaign for the GSLV-2 as well. So SDSC SHAR is going to be buzzed with a lot of work for the subsequent launch missions, which will be duly announced. At this time, let me take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister, as well as the government, for supporting us in making this launch vehicle available for commercial launches, because it was at a very short notice such an opportunity came to us, and we have to get ready with the required approvals and processes which were very necessary. And let me thank the approvals that are given to us for enabling this mission to take place, and it actually increased the confidence on us on this rocket GSLV-3 for taking up the Gaganyaan, which is going to be flying on this rocket as well. So let me give you an additional information. This rocket is also having the S200 motors, which are designed with an increased margins and features which are suited for the Gaganyaan configuration. So we are happy that it performed very well in this mission. There were many more improvements in this rocket which are aimed towards making it human rated in the other stages and systems as well. So I'm very happy to see the progress incrementally happening, moving towards the Gaganyaan mission as well. So at this moment, let us retire, and then we'll wait for the remaining news about the success of the separation of the remaining 16 satellites, and that will be informed to you through media, as well as social media, as well as our channels. So thank you then. Till then, goodbye from SDSC SHAR Sriharikota. Thank you.
சேனல்ல டாடா ஐபிஎல் ஐயே வா உனக்கு ஜியோ சினிமாவுல அசல் டாடா ஐபிஎல் காட்டுறேன். என்னண்ணே இவ்வளவு கிட்டயா கட்டி பிடிக்க போறீங்களா? வணக்கம் தல தோனி. இப்ப விளையாடவா? இனி டிஜிட்டல் இந்தியா காணும் டிஜிட்டல் டாடா ஐபிஎல் ஜியோ சினிமாவில் மட்டுமே எந்த ஸ்கிரீன்லயும் எந்த மொபைல் நெட்வொர்க்லயும் ஃப்ரீயா. How many streams of income do you have? This is the question my mentor asked me when I started my journey. I was in a job and I started learning and developing myself, and he asked me, how many streams of income do you have, Dave? I said, I got only one. He said, which stream of income is it? I said, I just make money from my salary. He said, this is the disaster. This is the reason why you're not able to get ahead in life. I was like, what do you mean? He said, poor people, they trade time for money. Rich people, they trade value for money. I was like, wow. And also, rich people have multiple streams of income. Only poor people have one or two maximum streams of income. And if you see, 90% of the people on this planet Earth live and die in active stream of income and only having less than 2 streams of income. Now, if you're watching this, if you have less than 2 streams of income, and that also majority of your income